So for second order reaction, if a reaction is A giving some product, the rate of reaction is defined as K into the concentration of A, and the order is 2, so the power is 2. This rate of reaction will always have the unit moles per liter per second. This will be equal to the unit of the K will be as it is, and the unit of A square, it will be moles per liter whole square. Moles per liter whole square. Here we have moles per liter to the power 1. Here we have moles per liter to the power 2. ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग ऐसे a और यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर है ऐसा है ना, दिस a कैन गेट कैंसिल और ये a स्क्वायर पे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेसिकली. मेक सेंस? ये समझ चल में गाइस? दिस मोल पर लीटर 4 to the power 1 है ना, and this is got it? Yes or no? सही तरह देख इस पर. Yes, sir. ठीक है, so now what we'll be having here, we'll be having second inverse is equal to K, and here we'll be having moles per liter. We need the unit of K, so this whole thing will go that side, and this will become what? Here, mole, it is in what to the power 1. Liter is inverse, that will become opposite. Mole will be -1, liter will be 1, and second inverse. That will be the unit of K. Let me know, does it make sense? देखते समझिए, अगर सेंस नहीं बन रहा फिर भी. In the 11th standard unit dimension measurement में आपने इस तरह की चीजें कुछ की होंगी, है ना? All of you got this now? Sir, can you explain the last bit, sir? Last step. जी sir. ठीक है, बिल्कुल explain कर देते हैं. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स और यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स इज इक्वल टू के. चलेगा? Yes, sir. अब मोल जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, when it will go above it will become liter to the power 1, है ना? And second inverse will be second inverse as it is. Make sense now? Yes, sir. Assalamu alaikum, Mariam. How are you? I'm good, sir. You were not present in the last lecture. Is everything fine? Yeah, I was in the mom. You? Sorry? I was in the mom. No. 50. What Your were you voice doing in the isn't mom? clear. What were you doing in the mom? I was with my cousins. छुट्टी थी, छुट्टी मना रहे थे. Yeah. Okay. So did you watch the lecture? No, but I did this chapter. You did this chapter. Okay. What do you mean you did this chapter? In school? Yes, sir. It came for my units. अच्छा अच्छा. Clear आपके हैं? Yeah, yeah. Now we are going to generalize a few things. तो यहाँ पे आप लिखिएगा जरा order. Here we will write the unit of K. So for zero order reaction, the unit of K is moles per liter per second. For the first order, the unit of K, we have seen that it is second inverse. Second inverse means second inverse again. And
For second order, it is mole inverse liter second inverse. ठीक है, देखिए इन तीनों को ना आई एम राइटिंग इट इन वन ऑफ द फॉर्म्स, एक अलग तरीके से थोड़ा हम लिखेंगे। देखिएगा, मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। आई एम ट्राइंग टू जनरलाइज थिंग, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, रोल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैन आई गेट द यूनिट ऑफ के इफ आई हैव द ऑर्डर? ठीक है, उसके बाद देखें, अगर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर to the power 1 - 1 second inverse. 1 - 1 will be 0. Anything to the power 0 is equal to 1. So बचेगा second inverse. Here we have 1 - 0 will be equal to 1. So moles per liter to the power 1 is the same thing. Moles per liter ही रहेगा. Anything to the power 1 is the same thing. Second inverse. And here I will write mole liter inverse to the power 1 - 2 second inverse. Now if you see 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1. तो मोल्स पर लीटर टू दी पावर -1, यानी जो मोल है ऐसे हो जाएगा ना, मोल पर लीटर टू दी पावर -1 सेकेंड इनवर्स। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, मोल पे पावर क्या है? 1 है, तो 1 × -1 विल बी -1। लीटर इनवर्स, लीटर -1 है, -1 × -1 विल बी 1 सेकेंड इनवर्स। नाउ दिस एंड दिस आर द सेम थिंग। तो इसी तरह से लोगों ने क्या किया ना, मतलब जनरलाइज करने की कोशिश की, एंड दे गॉट दिस एज द आंसर कि if you have the order, if order of reaction is given, then unit of K क्या होगा? मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर आप n में प्लग इन करेंगे कोई भी ऑर्डर, देन यू कैन डिराइव द यूनिट ऑफ K। ठीक है, अब वो इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए कि आप यहाँ पे 2 रखें तो -1 आएगा, -1 के बाद इस तरह से मैथ्स होगा, मोल का इनवर्स होगा, लीटर इनवर्स पे लीटर की पावर 1 हो जाएगा ना। नेक्स्ट थिंग इज, if the unit of rate constant is given, यानी कि इनमें से आपको दिया हुआ है कुछ, ठीक है ना, either it has been given, यूनिट आपको दिया हुआ है, ए का यूनिट दिया हुआ है आपको, देख आप क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू जो भी पावर हो एल का, पावर ऑफ एल में आप 1 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट केस व्हाट इज द पावर? -1, -1 + 1 0, ऑर्डर मिल गया। व्हाट इज द पावर ऑफ एल हियर? एल तो है ही नहीं सर, हम बोले हाँ सही बात है, तो एल की पावर क्या होगा? एल की पावर 0 होगा, तभी तो 1 है ना। अभी चल नहीं आई, if L is not present that means L की पावर 0। क्या ख्याल है? बोलो भाई, तो कुछ Yes, ख्याल sir. नहीं है ना। L की पावर क्या है यहाँ पे? 1, सॉरी L की पावर 0, 0 में ऐड कर दीजिए 1, क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, दैट इज द ऑर्डर। व्हाट इज द पावर ऑफ L हियर? व्हाट इज द पावर ऑफ L हियर? यहाँ पे L का पावर क्या है? 1 1, 1 में एक और ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द ऑर्डर, दैट इज 2। अगर आपको यूनिट दी हुई है, then in that unit you will fetch the power of L and add 1 to it, you will get what? You're going to get the order of reaction। Top it down, raise your hand once you're done। Video for Khadija, Mariam, Siddiqa, and yeah,
हो गया, ठीक है, वेरी गुड। दो सवाल है। पहले सवाल कीजिए। ये किसी साल आया था पेपर में, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। मोस्ट प्रोबेबली 2023 या 2023 या 2024 पेपर का। यस, सही सुनी। ओके अन्ना। ओके मरियम। ओके ताहा। थोड़ा। ओके सद्दीका। जस्ट गिव मी ए बी सी, है ना, और हमको ए बी सी डी में सिद्दीकी बस, और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। आई गॉट द आंसर, है ना, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ रेट कांस्टेंट। कब? कब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है? आई होप दिस इज प्रेजेंट इन योर नोट्स ऑलरेडी। डायरेक्टली नहीं, बट यू हैव टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन, कि आप किस तरह से सवालों को समझ रहे हैं, है ना। आप किस तरह से सवाल में, नोट्स में जो चीज मौजूद है, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट टू आंसर समथिंग। ओके, इट्स नॉट कि हम आपको सारे आंसर बताएं, ठीक है, होपफुली। ये एम नहीं होना चाहिए। एम होना चाहिए कि जो थ्योरी पढ़ाई गई है उससे आपके पास कंप्लीट, जरूरी नहीं ना यही सवाल आ जाए। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सम अदर डिफरेंट वे आल्सो। भले ही शायद बोर्ड्स में ना ऐसा हो, लेकिन कुछ दूसरे एग्जाम पे तो देंगे आप। उन एग्जाम पे तो खास तौर से व्हाट विल हैपन, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज द थ्योरी टू गेट टू द आंसर। तो इसमें आपके पास आंसर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं देंगे हम, क्यों है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कॉम्प्रिहेंड कीजिए आप चीजों को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ही आसान था ये, इस वजह से, है ना। जहां मुश्किल है वहां पे तो हम बताएंगे ये चीज आपको ना, बट समवेयर आई विल पुश यू गाइस टू थिंक। अब जैसे ये सवाल है, इसमें भी क्या ही करना है, देखिए, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू प्लस द यूनिट, बोथ ऑफ दीस थिंग्स आर गिवन। हाउ टू गेट द ऑर्डर, पावर ऑफ एल प्लस वन। सेपरेट योर आंसर बाय कॉमा, नो नीड टू राइट वन टू, है ना। और सिर्फ नंबर लिखिएगा, अगर आपको लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर है तो वन लिख दीजिए, अगर आपको लग रहा है सेकंड ऑर्डर है तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना टाइप करने में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, तो हम आपके आंसर समझ जाएंगे, है ना, क्या क्या आंसर करना चाहते हैं। जी हाँ, अन्ना एंड हर्षा, करेक्ट, वेरी गुड। वैसे बाय द वे काफी सही लोगों का ऑलमोस्ट सही जवाब आया था लास्ट क्वेश्चन में, है ना। आई थिंक इसने नहीं जवाब दिया था, सिर्फ खदीजा ने जवाब नहीं दिया था शायद, अदरवाइज एवरीवन आंसर्ड। यस, मैं देखो, कहा इतना, इतने हम इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल कहे कि अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है सेकंड ऑर्डर तो टू लिखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर तो वन लिखिएगा। आप क्या पूरा पूरा क्यों लिख रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, सो इन द फर्स्ट केस ये देखिए आंसर आना चाहिए, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है? मरियम, मरियम का आंसर आया नहीं आया? सिद्दीका, जल्दी आंसर करें भाई। पावर ऑफ एल प्लस वन।
सेपरेट योर आंसर्स बाय कॉमा, ये सिद्धि का भी वही नहीं, सिद्धि का भी वैसे सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है चलिए देखिए, L to the power 1 है यहाँ पे, because there is no power written, that's why it is 1. So order will be equal to 2. And यहाँ पे we don't have in L, that means the power of L is 0. So order will be 0 plus 1, that is equal to 1. ठीक है, बहुत ही आसान। इस तरह के सवाल आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यू डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। वहां पे सीधा लिखना है आपको ऑर्डर इज इक्वल टू 2। वहां पे सीधा लिखना है आपको ऑर्डर इज इक्वल टू 1। कहाँ से आया कैसे आया हमको नहीं पता, जिब्रील आके बता गया हमको। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं बताना वहां पे कि कैसे आया है ना। डोंट, 1 मार्क्स का सवाल होगा, कुछ रत्ती भर भी आप उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा कि हम उसमें 5 लाइन की थ्योरी लिख के आए। नो नीड। ठीक है, जहां लिखना रहेगा वहां पे बताएंगे, एग्जैक्टली बताएंगे आपको एकदम पॉइंट करके। ये वर्ड होना चाहिए आंसर में, नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये फ्रेज होना चाहिए आंसर में, नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई विल टेल ऑल ऑफ दीस थिंग्स। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि कहाँ आपको लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, कहाँ से आया। ठीक है, बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं सर, ऑर्डर का तो पता है। ऑर्डर के तो हम ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू मोल्स लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। यहाँ पे हम पुट कर देंगे दूसरा करें। ठीक है, तो वो आप जब ऑर्डर के बारे में पूछे तब आप कर दीजिएगा शुरू करने के लिए, करना हो तो। शायद इस फॉर्मूले को लिखने के लिए आपको हाफ मार्क मिल जाए, when they ask for k, बट ऑर्डर में कभी नहीं। वैसे इवन के में भी कभी हमने नहीं देखा कि स्टेप मार्किंग हो 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा बाय द वे एक चीज आपको दिखाना था हमको, आई हैव कॉपीड दिस। इसमें ना थोड़ा सा आपको मतलब जैसे ए वाला है ना, द कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल, दिस इज ए क्वेश्चन। उसके बाद बी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपके पास ये आंसर है बी का, उसको इग्नोर कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 या 2022 का पेपर होगा। दिस इज द मार्किंग स्कीम दैट इज रिलीज बाय सीबीएसई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलोड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब देखिए, जब हमने सबसे पहली बार इस तरह के सवाल को किया था, देन कितना हम लोगों ने लिखा था, आई थिंक इससे इस क्लास से ही पहले किया था। हाँ ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना। देखिए 3 लाइन हमने लिखा है। ठीक है, 3 लाइन्स रिटन 3 लाइन्स। और मार्किंग स्कीम क्या बोल रहा है, क्या लिखने, 9 टाइम्स, खत्म। टू ना आर वन, लाइक इफ यू सी दिस आंसर आपको पता भी नहीं चलेगा किसका आंसर है। 9 टाइम्स, व्हाट 9 टाइम्स। ठीक है, तो इतना छोटा लिखना आपको 1 मार्क्स के लिए। आई थिंक ये 1 मार्क्स यहाँ पे होगा, कहीं पे लिखा होगा है ना, 1 मार्क्स। ठीक है, अब ये जो बी वाले है ना पार्ट, बी वाला पार्ट में इसमें एग्जाम्पल का 1 मार्क्स है, और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट लिखी है उसका मार्क्स है, वो हम लोग अभी आज ही पढ़ने वाले। ठीक है, जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए मूविंग ऑन, राइट द टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द चैप्टर हैलोल्किन हैलोजन। पता है लोग क्यों हैलोल्किन हैलोजन पहले पढ़ा देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। लॉजिकली स्पीकिंग भी अगर आप समझे ना, तो कुछ रिएक्शन ऐसे हो सकते हैं जो एक ही बार मतलब एक ही स्टेप में हो जाए, कुछ एक से ज्यादा स्टेप में होंगे। ठीक, इसमें आपको कुछ समझने वाली बात नहीं। तो अगर एक बार हमने आपको बता दिया तो आपको लॉजिकल लगना चाहिए। some things, some reaction could happen in a single step, other reaction will happen in multiple steps. अच्छा, so the reaction which occur in single step उसको एक नाम दिया है, और जो मल्टीपल स्टेप में होते हैं उनको भी एक नाम दिया गया है। ठीक है, तीन तो नहीं करना हमको, 2 ही करना है, 3 तो करना है। ठीक,
So there is one which is known as elementary reaction. The other one, it is known as complex reaction. Complex reaction. Okay. So elementary reaction, it occurs in single step. It occurs in a single step. Complex reaction, it occurs in multiple steps. ठीक है, this is just nomenclature है. This is just the nomenclature. अब elementary reaction के बारे में एक चीज जो बहुत ही आसान चीज है, it's very good about elementary reaction. Please write with me the order of elementary reaction can be determined please write this with me can be determined by balanced chemical equation. क्या मतलब इसका? मतलब ये है, अगर आपके पास if you have something like this, A is giving you some product B, that means अगर आपके पास यहाँ पे stoichiometric coefficient A का कितना है 1, for this we can write R is equal to K into the concentration of A to the power 1. अगर उसी तरह से आपके पास है 2A, if there is a reaction in which the stoichiometric coefficient of A is 2, it's giving you some product. एक प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है ना. I'm writing this products R A into A to the power 2. If you have A plus B giving you some product B, then rate of reaction will be equal to the rate constant multiplied by the concentration of A square, because we are having two reactions. ठीक है, अच्छा A square में होगा my bad, A and B, ठीक है. एंड उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह से 2A plus B giving you the products, then R will be equal to K into the concentration of A to the power 2 and B to the power 2. बट इस तरह के रिएक्शन ना जनरली जो होते हैं, दिस आर नॉट गोइंग टू बी एलिमेंट्री, है ना, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो पाते हैं, बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन में मतलब 3 एटम्स एक साथ टकरा रहे हैं, एंड दैट्स वेरी रेयर. 3 एटम्स कोलाइडिंग टुगेदर, दैट्स वेरी रेयर. ठीक है, तो टर्म मॉलिक्यूलर जो होता है ना, 3 मॉलिक्यूलर की मॉलिक्युलरिटी 3 होती है, उसमें रिएक्शन बहुत ही कम होता है. नाउ यू राइट नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ elementary reaction is equal to, जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ए का, उसको मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट? In the first reaction we have one molecule, in the second reaction we have two molecules, in the third reaction also we are having two molecules. The number of molecules in the reaction is known as molecularity of reaction. So the order होता है elementary reaction का, that is equal to molecularity of reaction. Now, next point you will write, in complex reaction, elementary reaction यहाँ पे खत्म है, इसके ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया. In complex reaction, each elementary step, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो अलग अलग स्टेप्स होंगे ना, दो स्टेप्स ऑन इट्स ओन विल बी एलिमेंट्री. पहला स्टेप एक बार में हो जाएगा ना, ठीक है, दैट स्टेप वी विल कॉल दैट एलिमेंटरी स्टेप. ईच एलिमेंटरी स्टेप proceeds with different rate. Proceeds with different rate.
Right, next point, the slowest step in a complex reaction determines the rate of reaction. Determines the rate of reaction. इसको आप समझाते हैं लास्ट वाले पॉइंट को, ठीक है? यहाँ तक लिख लीजिए पहले. Raise your hand once you're done writing. Waiting for Khadija, Satika, Harsha, and Taha. एक सवाल है आप लोगों के लिए. Let's suppose we have washed t-shirt, a shirt, and a jeans, and we want to dry it up. Okay, so we are going to put t-shirt, shirt, and jeans in the cloth line, and we observe. मतलब हमको पता है ये चीज कि t-shirt को सूखने में it approximately takes 5 minutes. Shirt takes approximately 10 minutes. And jeans takes approximately 15 minutes to dry up. ठीक है? जब हमने तीनों को रखा, तो what will be the total time taken? In the chat, please tell me in the chat. What will be the total time taken to dry the shirt, t-shirt and jeans? तीनों को dry करने में कितना time लगेगा? In the chat, please. Like, keep the answers coming. I've got answers from Anna, Harsha, Taha, Maria. Waiting for Khadija, Siddiqa, Yahya. Yahya, are you there in the class? Yes, Yahya. Yes, sir, but my internet is very weak. आपको आवाज मेरी आ रही समझ में, हम जो क्या बोल रहे हैं, समझा रहे हैं? हाँ सर, हल्लो हल्लो आ रही है, वो अटक अटक क्या आ रही है. Yes, guys. What will be the total time taken to dry the three clothes? चलिए, खदीजा का आंसर नहीं यार, बच्चे तो कुछ करती ही नहीं है. नहीं मेरे जीन्स ऐसे इंतजार में रहेगा क्या? जिन लोगों ने 30 मिनट लिखा है, 30 मिनट्स, जीन्स इंतजार में रहेगा क्या? मेरे टी शर्ट और शर्ट भाई बंधु सूख जाए, उसके बाद हम सूखना स्टार्ट करेंगे. अरे 15 मिनट में सब नहीं हो जाएगा. द जीन्स विल नॉट बी वेटिंग ना. इवन द शर्ट वेट कर रहा होगा ना. टी शर्ट सूख जाए फिर हम सूखना स्टार्ट होते हैं. रुक जाओ, शर्ट तुम सूख जाओ उसके बाद हम सूखना स्टार्ट. ऐसा तो नहीं होगा. Once you keep all the three things to dry up in the first 5 minutes, t-shirt will be in the next 5 minutes. Shirt will be dried up. In the next 5 minutes, jeans हो जाएगा. jeans पे इंतजार करते रहेगा. ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? Is this clear with everyone? Yes or no? I need answers. Yahya, Maryam, Anna. Yes sir. क्लियर है सबको ना? ठीक है. अब एक बात बताइए, ठीक है, ध्यान से. If the shirt took 8 minutes, अगर शर्ट 8 मिनट लेता, तब भी टोटल टाइम would be what? 15 minutes only. Yes or no? Please tell me. I need yes sir, no sir. If the t-shirt Yes, took, sir. है ना, 8 मिनट, तब भी टोटल टाइम क्या रहता? 15 मिनट्स ही रहता. If the shirt took 12 minutes, तब भी टोटल टाइम would be what? The total time would be still 15 minutes. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. Yes sir. But if the jeans took, let us suppose 25 minutes, अब टोटल टाइम क्या हो जाता? What would be the total time to dry up right now if the jeans is taking 25 minutes?
25. 25. That means the speed, if you have multiple things going on, then the speed depends on the slowest thing. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Jeans is the slowest to dry up, and the speed of drying up of all these three depends on how fast the jeans is drying, which is the slowest step. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह से if we are having different multiple steps में the step which is the slowest is going to determine reaction, the speed of reaction, and by what? By giving you the order. तो order किस पे depend करेगा? Slowest step पे depend करेगा. तो यही चीज हमने लिखी है यहाँ पे. The slowest step determines the rate of reaction. Is this point clear now? Yes or no? भाई सन्नाटा क्या है? सन्नाटा क्या है यार? सन्नाटा हाँ Yes, भाई sir. मेक सेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक हम रिएक्शन है आपके पास NO प्लस U gives NO प्लस U. ठीक है. स्टेप 1 है इसमें. दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन. कैसे होता है ये रिएक्शन? स्टेप 1 NO2 प्लस NO2. अब सब सर दूसरा NO2 कहां से आया? अरे भाई एक ही NO2 थे ना. यू विल बी हैविंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ NO2s in the reaction mixture. So one NO2 can bump into the other NO2. They can collide. So NO2 दोनों एक दूसरे में collide करते हैं and they give NO plus NO3. And this particular step it is slow. ये step कैसा है? Slow. Step 2. अब दूसरा आपके पास ये जो NO3 है ना, this NO3 comes, it reacts with CO and it gives you CO2 plus NO. अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखिएगा ना आप तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये NO3 और ये NO3 कैंसिल हो जाएगा, NO2 और NO2 कैंसिल हो जाएगा. NO2 plus CO, NO2 plus CO gives you NO plus CO2 gives you NO plus CO. ठीक है. तो ओवरऑल रिएक्शन अभी भी आपके पास सेम ही है even though it is happening in steps. Now in this case we can write the rate, it is equal to the rate constant multiplied by the concentration of NO2 to the power 2. Sir, why? Because this step is the rate determining step. This is known as RDS. RDS, the rate determining step. And this step is what? An elementary step. अगर rate यही determine कर रहा है, that means the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the molecules involved in this particular step. कौन से molecule है? दो NO2 है तो NO2 की power 2 हो जाएगा. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Copy Yes, this sir. down. Raise your hand once you are done. यहाँ पे लिखिएगा you write this point later on.
लिखिए क्या तो टीचर का इंतजार कर रहे हैं do this question. This was asked in maybe 2021, 2020, 2022 से पहले का है ये। देखिए भाई स्क्वायर मत कर दीजिएगा हर जगह, ठीक है ना, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के कीजिएगा। स्टेप वन में दो रिएक्टेंट थे, दो दो NO2 दो बार लिखने के बजाय वी हैव रिटन NO2 का स्क्वायर। ट्राई टू आइडेंटिफाई द दो स्टेप, इसमें जो जो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं यू विल राइट दैट इन द रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगा कीजिएगा, ठीक है। टू वन जा टू, टू टू जा फोर जैसी चीज नहीं है, यू हैव टू अप्लाई सम लिटिल बिट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस आपको। या उल्टे ऑर्डर में कीजिएगा, इफ यू डू दिस क्वेश्चन इन द रिवर्स ऑर्डर, आप पहले आउट ऑफ वन एंड टू विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसमें देखिए कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, वही आपका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद फिर रेट लॉ लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। उल्टा कीजिए ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, मतलब उल्टा ही करना पड़ेगा, सीधा रेट लॉ कैसे लिख देंगे, यू नो व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Okay, send the answer on my WhatsApp. Guys, I will taking step. Please turn your mic on. I will help you out. Where to look at the notes. Importance of the question. Correct. बिल्कुल सही है। Your answer. Yes, Anna, very good. Correct. Very good. सही बात।
Yes, Mariam, very good, correct. Sir, can you explain the second bit? Overall order of reaction. Correct. Yes, sir. थोड़ा सोचो क्या लगता है? A और B कर लेना, R is equal to K into concentration of A into concentration of B, है ना इसी तरह से आपका? Yes, sir. तो A का पावर में क्या है 1 है सर. और B के पावर में क्या है? 1 सर. तो ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2. हाँ, बस सही है। Yes, sir. कुछ नया था क्या? No, sir. हाँ, रिवाइज कीजिए इंडिया, यानी आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कीजिए प्लीज। ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है। हाँ, अब आपको बताते हैं, अब वो टाइम आ चुका है दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग योर नोट्स। हम पहले बिल्कुल ही मना करते थे कि डोंट रीड योर नोट्स, दैट इज बिकॉज स्टार्टिंग में आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। इन द फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब तक रीड करने की जरूरत नहीं है, डू प्रॉब्लम्स, है ना। इनफैक्ट वो भी तो नहीं किया है आप लोगों ने, वो भी करते तो कोई अच्छी अच्छी बात हो जाती ना, लेकिन वो भी तो नहीं किया है ना। है, तो बीत गए दिन तो छोड़िए, कोई बात नहीं, यू हैव वन बिग चांस विद इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? कैन यू सी दैट? व्हाट इज द बिग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ? बताओ भाई, मरियम आपको दिख रहा है क्या? व्हाट इज द बिग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ? नॉट राइट नाउ, एक बहुत सामने आपकी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, दिख रहा है आपको सब कुछ ठीक कर लेने का। यस मरियम, दिख रहा है आपको Sir, मरियम? can you repeat? There is a big opportunity in front of you to make an academic comeback. दिख रही है आपको वो चीज? कौन सा बिग अपॉर्चुनिटी है? जस्ट इन Yes, फ्रंट ऑफ sir. कौन? व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? क्या है वो अपॉर्चुनिटी? अन्ना, केमिस्ट्री हम ऐसे नहीं बात करें, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, मैथ्स का, कहीं पे भी आपके थोड़ा वर्ड्स, वर्ड्स अपॉर्चुनिटी है, वर्ड्स अपॉर्चुनिटी, वर्ड्स अपॉर्चुनिटी टू मेक एन एकेडमिक कमबैक। मतलब अभी जो आपको छुट्टी हुई चीजें हैं ना, उनको आप कवर कर सकते हैं। यू कैन क्लियर योर बैकलॉग, द सब्जेक्ट इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, यू कैन कंसंट्रेट ऑन दोस सब्जेक्ट्स, द चैप्टर्स यू हैव मिस्ड, यू कैन डू Summer दोस चैप्टर्स। holidays? Vacation. हाँ, यस, करेक्ट। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब यहाँ नहीं संभले तो फिर पता नहीं कहाँ संभले, यहाँ नहीं संभले तो संभलने का, स्कूल आपको संभलने का मौका नहीं देती है। आई थिंक इतना तो क्लियर होगा आप लोग को ना। 12th स्टैंडर्ड में आने के बावजूद इफ यू गाइज आर टेकिंग हॉलीडेज फॉर यूनिट टेस्ट, यानी कि स्कूल की तरफ से इतना इमेंस प्रेशर है कि आप आओ टेस्ट में। आप मतलब लर्निंग, हम तो नहीं देते उतना ज्यादा प्रेशर, अभी आप लोग को प्रेशर तो हम देंगे, तो पता है। लेकिन आप लोग को यार लर्निंग में हम हर हफ्ते टेस्ट पेपर, हर हफ्ते नहीं, फोर्टनाइटली टेस्ट पेपर बनाते हैं, एक बच्चा दे रहा है, दो बच्चा दे रहा है, क्या दिक्कत है आप लोग को? आप लोग को अब तो इतनी इतना फ्रीडम दे दिया गया है दैट यू कैन चूज अ टाइम स्लॉट कि हमको इस स्लॉट में पेपर देना, आपको उस स्लॉट में पेपर देने दिया जाएगा। उसके बावजूद सिर्फ एक बच्चे ने पेपर दिया था लास्ट टेस्ट में, वन। ठीक है, तो अभी तो चलिए ठीक है, अभी तो हम दे रहे हैं, हम तो देते, आई नो व्हेन टू पिट, ठीक है। वो तो हम जब पकड़ेंगे तो फिर बहुत जबरदस्त पकड़ेंगे आप लोग को, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा वो टाइम आएगा जल्दी। एक तो आपके पास समर वेकेशन है, जहां भी कुछ दिक्कतें हैं आप उनको रिकग्नाइज कीजिए, complete the NCERT exercises, complete the NCERT in-text question, complete the readings of each and every chapter that we have completed in NCERT। NCERT की रीडिंग भी बहुत जरूरी है, रीड। ठीक है, समर वेकेशन बहुत टाइम मिलेगा, ये चीज आपके जहन में नहीं होना चाहिए और मैं क्या पढ़ूं, मेरे पास तो पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आता क्या पढ़े, ये नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, रीडिंग करो एनसीईआरटी की, ठीक है। इफ यू डोंट नो, मेक ऑल्सो गेट अ रूटीन, ओके। समर वेकेशन आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब ये शायद फ्राइडे लास्ट
वर्किंग डे होगा, आप लोग फ्राइडे क्या बोल रहे हैं, दिस थर्सडे वुड बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस संडे सैटरडे, इस तरह से लास्ट वर्किंग डे आ रहा होगा। बिफोर रीचिंग द समर वेकेशन मेक अ प्लान कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं मेरे लिए, कहाँ कहाँ गिरते हैं हम, है ना। और जहां जहां आप गिरते हैं, जहां जहां भी वो आपके पास पॉटहोल्स हैं, उनको भरिए, उनकी मरम्मत कीजिए। ठीक है, सिद्दीक का आंसर अभी है। एक महीने से ज्यादा हो जाता है सिद्दीक का, आपको आंसर भेजा दिख रहा है आपको थोड़ा, मेरे व्हाट्सएप चैट में दिख रहा है सिद्दीक का। लास्ट आंसर जो आपने भेजा था ना, वो 22 मई को भेजा था, और आज 26 जून को आप एक मैसेज मतलब उनको आंसर भेज रहे हैं। और एक एक बच्चे हैं यहाँ पे, खदीजा, नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी हैं खदीजा खान, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी हैं यहाँ। चैट में कौन मैसेज कर रहे हैं? ठीक है, ओके मरियम। केमिस्ट्री में आपको अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है, देन प्लीज लेट मी नो। ठीक है, जो चैप्टर हमने आपको कराया है उसमें अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में दिक्कत दिक्कत आ रही है अगर, तो प्लीज हमको बताइएगा। ठीक है, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ज्यादा फोकस होना चाहिए आपके लर्निंग पे, मेरे टीचिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करके आपको फायदा नहीं होने वाला है किसी भी टीचर के। अरे सर हमको ये भी पढ़ा दिए, हमको वो कर, अरे आप तो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्राई टू थिंक इन दो टर्म्स। जब आप पढ़िएगा, जब आप सवाल को कीजिएगा, जब आप सवाल में अटकिएगा, फिर सवाल को समझिएगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखिएगा, फिर थ्योरी को पढ़िएगा, फिर वापस से उस सवाल पे आइएगा, फिर जब सवाल बनेगा ना, तब वो सवाल बना, तब वो लर्निंग थी। ये नहीं कि सवाल समझ में आया, सवाल पढ़ा, ऊपर ऊपर से ऐसे घास काटने जैसा आपने उसको सवाल किया, और फिर आंसर आया -2, फिर जाके देखा तो आंसर था +2। ओ अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वो आपको लग रहा है कि आपका सवाल हुआ, इस तरह से नहीं। इस तरह के सवालों को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे आपने ये गलतियां की हैं, दैट द क्वेश्चन दैट यू इन रियलिटी डू नॉट नो, एंड आपको लग रहा है कि हमको आता है। ठीक है, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ थिंग्स। पर ये चीज थोड़ा हम मतलब आई डोंट, लड़कों में ज्यादा होती है। ठीक है, आई हैव सीन दिस, तो ताहा यहिया वगैरह, आप इस चीज को ख्याल रखें कि ये इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस आपको ना आ जाए, है ना, कि आपको चीजें आती है। तो थर्ड स्टेप से स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन से, आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग, तो स्लो स्टेप दैट इज स्टेप 1। बस इतना ही लिखना है आपको, 1 मार्क्स मिल गया। राइट दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप 1 में कितने रिएक्टेंट थे, 1 2, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन आर, इट इज इक्वल टू K into the concentration of H2O2 into the concentration of I negative। ठीक, आप समझो तो यार, 3 मार्क्स आपको कैसे मिल रहे हैं केमिस्ट्री में, ऐसे। ये है 3 मार्क्स, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। हम जो कहते हैं ना कि आते ही नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे केमिस्ट्री, सारे के सारे सवाल 1 मार्क्स होते हैं, रेयरली यू विल हैव 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स। ये है यहाँ पे 3 मार्क्स सवाल। एंड नाउ इमेजिन दोस्त आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विथ मी। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स इक्वेशन को सॉल्व करके 3 मार्क्स मिलेगा, और ये 3 लाइन लिख के 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सो डोंट लीव दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, इसमें बहुत आसान सा सवाल आपके पास आ जाता है। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जैसा वफादार सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं, जो कराया जाता है, तो इसमें आपको स्कोप ही नहीं है फंसने का। एक डिट्टो आता है बायो की तरह, बायो में, बायो से स्कोरिंग सब्जेक्ट ना, जिस तरह से ऐसे मैथ्स में आप अटक सकते हैं, वाइल सॉल्विंग आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, फिजिक्स में भी हो सकता है, डेरिवेशन में अटक गया, केमिस्ट्री में नहीं है, बायो में चीज नहीं, लेकिन बायो पढ़ना बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री जैसा वफादार सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, भले ही आप इसको कितनी भी गाड़ी दे दे, क्या होता है इसमें क्या नहीं होता, हमको समझ ही नहीं आता, जो भी बोल रहे हैं आप, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। एग्जाम नजदीक आते आते जब पूछना चालू होइएगा ना मैथ्स में, इंटीग्रेशन जब आएगा, इंटीग्रेशन में जब इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला इंटीग्रेशन करते हैं क्या आप लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये इंटीग्रेशन होता है हर्षा? यस सर। होता है, जब आएगा ना,
चलिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जरा सम पॉइंट्स, दीस पॉइंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली थ्योरी से भी सवाल इसमें आ जाता है, ठीक है। सो विल जस्ट राइट दिस पॉइंट, इसको आप रिवाइज करेंगे। हाँ, अच्छा, बात हमने स्टार्ट की थी कि रीडिंग करने के लिए नोट्स की, है ना। रीडिंग करने का मतलब ये इवन फॉर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, ठीक है, थोड़ा सा बता देते रीडिंग कैसे करना है। रीडिंग आपको इस तरह से करना है, क्योंकि अब वेकेशन आ रहा है, टाइम होगा आपके पास, तो रीडिंग करना चालू कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो वंस व्हाइल यू आर रीडिंग द नोट्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको पता है न्यूज़पेपर पढ़ा है कितने लोगों ने यहाँ पे? अन्नपूर्णा, खदीजा, मरियम, सिद्दीका, हर्षद, किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा है? अरे न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में तो जानते हो ना, एक टाइम आएगा किसी कोई बच्चा होगा न्यूज़पेपर नहीं देखा होगा किसी ने, पक्का बता रहे हैं हम, एक टाइम जरूर आने वाला है ऐसा। हाँ, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट पता होगा, हेडलाइन होता है, उसके बाद फिर न्यूज़ होती है। यस और नो गाइस? इट्स लाइक दैट ओनली, है ना? Yes, sir. यस सिद्दीका, हेडलाइन एंड देन यू हैव द न्यूज़, Yes, है sir. ना? Yes. So you will read the newspaper, the newspaper reading, so that you read the headline first. That means in your chemistry notebook or in physics notebook, I would say, ठीक है, भले ही फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट स्टिल, चलिए हम फिजिक्स के बारे में नहीं बात करें, केमिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। इन केमिस्ट्री यू विल रीड द टॉपिक, हेडलाइन का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है। Close your eyes and try to think about that topic. If you know that topic, that's fine. You can just go through ऊपर से। Yeah. I correctly remember. Yeah. ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। Flip the page. If there is any formula, try to remember the formula. The formula को पढ़िए एक बार, आंख बंद करके, फिर उसके बाद ये कर लिए, तुरंत निकल जाना है। रटना नहीं है फॉर्मूला को, ही बैठ के पूरा टाइम लगा देना फॉर्मूला रटने में। No, you don't have to do that. If you see the formula, if you see a formula, read the formula, like put the hand, hide the formula, try to think whether you can remember it or not. Then again see it and then flip it. Flip the page. Now, if you remember it, well and good. If you don't remember, then also well and good. Flip the page, then read the next page. Yes. Oh, yes. ये तो याद है। Oh, यहाँ ये सवाल नहीं हुआ तुमसे। Okay, ठीक है। Then you, now if you have noted down which question you were not able to do, then उसमें you have to go to meticulously read the steps, है ना। You will meticulously read the step and try to find out, okay fine, यहाँ पे हम फंसे थे, or I can also get stuck here, I can get stuck in the calculation here, ठीक है। So those things should be just popping in your head, no need to write anything, ठीक है। तो इस तरह से you are going to flip the pages and continue reading. So what would happen right now is that you will not forget, okay, right now we are in what, third chapter, solution electrochemistry and chemical kinetics. Now, as soon as we jump to coordination compound or we jump to halogen halogene, you will start forgetting the physical chemistry part. Because in this, we are always reading, we are always hearing this term molarity. We are always hearing this term, these terms, ना तो आपको याद रहेंगे. But as soon as we move forward, you will start forgetting. तो वो चीज नहीं है कि मतलब एग्जाम आया सबको तो पुराना कुछ याद ही नहीं आ रहा है. That should not happen. That is why you should start reading the notes. बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना बताएं? अन्ना, खदीजा, मरियम, सिद्दीका, हर्षा, ताहा, नित्या. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रीडिंग कैसे करना है वो भी समझ में आ गया? Yes, sir. ना अगर आप उस रीडिंग की वजह से यू शुड नॉट सैक्रिफाइस व्हाट यू आर करेंटली डूइंग. करंट नोट्स में व्हाट यू शुड डू, आई होप यू नो दैट. वंस द क्लास इज डन, यू विल रीड द नोट्स मेटिकुलसली. इफ देयर इज एनी फॉर्मूला शीट अगर आप बना रहे, फॉर्मूला शीट में लिखिएगा. इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट यू आर नॉट एबल टू डू, यू विल रीडू दैट क्वेश्चन. If there was a question that I did in the class, you did not do, हमने बोला था I will solve this, then you are going to solve that with pen and paper, ठीक है? So these things should be in continuation. With one additional thing that you are going to do is the reading of the newspaper. Now this reading should continue till the board examination. When you are going in a bus, भले ही आपको लोग पढ़ाकू बोले, भाई पढ़ने के लिए तो आज जा रहे हैं हम स्कूल, क्यों जा रहे हैं स्कूल? I hope you guys don't fear these words. पढ़ाकू कोई हमको बोल देगा, अरे ये तो नर्ड हो चुका है, ये कैसे कोई कुछ बोल देगा. प्लीज डोंट फियर दिस वर्ड. हमसे हम जब पढ़ते रहते थे, कोई ताना मारने के लिए आता था ना, अबे क्या पढ़, मतलब पढ़ने के लिए भेजा मेरा बाप, मेरे बाप ने हमको पढ़ने भेजा भाई, ठीक है, तो वो पढ़ने दो उसका. वो पढ़ाकू बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, हमको उससे मतलब नहीं है.
अगेन दिस थिंग, ये थोड़ा ज्यादा लड़कों के अंदर होता है कि लड़के नहीं चाहते कि दूसरा कोई हमको देखे कि हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बुराई नहीं, किस लिए जा रहे हैं आप स्कूल? पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं ना। वाइल गोइंग टू द बस, वाइल गोइंग टू द स्कूल इन द बस, अगर आप बस में जाते हैं तो नोट्स निकाल लिया, आप नोट्स पढ़ दो। ठीक है, आप नोट्स क्या कर रहे हैं, बस रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये रहेगा ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें पुरानी पुरानी याद है, कुछ कुछ चीजें पुरानी पुरानी याद है, कुछ कुछ चीजें तो एकदम ऐसे गायब नहीं हो जाएगा। अरे ये क्या लिखा है हमने, व्हाट आई हैव रिटन हियर, व्हेन वाज दिस डन, ओह आई हैव स्टडीड दिस टॉपिक आल्सो, दिस थिंग विल नॉट हैपन, है ना, आप भूल नहीं जाए। चलिए, मूविंग, molecularity of reaction, please write this with me. It is defined as the number of molecules which must collide simultaneously in an elementary reaction. Next point will write molecularity of a reaction is only applicable for elementary reactions. And it has no significance for complex reaction. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। This point was an answer to a question, ठीक है, in the board examination. ये सेम पॉइंट ही क्या था, एक सवाल में जाता है। I will show that question also. It's very simple statement that molecularity is not applicable for, is only applicable for elementary complex reaction में molecularity का कोई भी significance नहीं होता है. No matter how many molecules are colliding in a complex reaction, it does not matter. What matters in complex reaction is the slowest step. Then you will write next point, if molecularity of a reaction is 1, then it is called unimolecular reaction. If it is 2, then it is called bimolecular reaction. If the molecularity is 3, which is very rare, very, very rare, then it is called termolecular reaction. Molecularity greater than 3 is rarely observed. And that will write remarks. अब ये remarks वाले point and in the order of reaction, I have written some note या remarks वहाँ पे भी मैंने लिखाया होगा, ठीक है? So these remarks of molecularity and those remarks of order of reaction, they will serve as the difference between. ठीक है? If they ask the difference between order of reaction and molecularity of reaction, that is also one of the questions that they can ask. आए हैं इस तरह के सवाल है ना, what is the difference? Write 2 differences between molecularity of a reaction and order of reaction. Then remarks के 2 points और मतलब molecularity के remarks से 2 point
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिमार्क्स के 2 पॉइंट, ठीक है, तो उनको लिख लीजिएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। यहीं पे एक होमवर्क भी हम लिख देंगे आप लोग के लिए, यू विल राइट हियर, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, theoretical concept. It can only be whole number. It can never be negative, zero और fractional. Basically ये पता ना कितनी कितनी चीजें हैं, हाउ मेनी रिएक्टेंट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, हाउ मेनी में 1 आएगा, 2 आएगा, हाफ में ना आ जाएगा। हाफ मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ नहीं होता हाफ मॉलिक्यूल। इट हैज नो सिग्निफिकेंस with on the rate of reaction. लास्ट में लिखिएगा इट does not change with change in temperature, pressure, etc. अब एक होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, पता नहीं होमवर्क वगैरह बोलते तो है आप लोग क्या कीजिए, लेकिन राइट डिफरेंस बिटवीन order and molecularity of reaction. By the way, I was talking that there is a question which was asked. How order and molecularity are different for complex reaction. ठीक है, तो order जो होता है ना for a complex reaction ना, how मतलब order का relation complex reaction के साथ क्या है और molecularity का क्या relation है complex reaction के साथ, वैसे आपको आंसर करना है। तो order का क्या relation है complex reaction के साथ? That order is determined by the slowest step of a complex reaction. क्या लिखेंगे? Order is determined by the slowest step in complex reaction. ठीक है, और molecularity का क्या relation है complex reaction के साथ? It has no significance, no meaning for complex reaction, has no meaning. Yes, significance for complex reaction. ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे आप लिख दीजिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बट molecularity has no meaning slash significance for complex reaction. Raise your hand once you're done writing.
Khadija and Taha.